welcome to Y Factor. I'm Shreya Upadhyay. Well, the first working group meeting on tourism under India's G20 presidency was hosted by the magnificent Rann of Kutch in Gujarat. G20 delegates visited UNESCO World Heritage sites, ate some delicious local delicacies and started their day with yoga sessions aside from working on sustainable tourism. In Y Factor today, I will tell you a wrap-up of this 3-day event that happened in Rann of Kutch, what happened there and what transpired in those meetings and what delegates really felt about visiting India. All of this today in Y Factor. गुजरात के कच्छ ने 7 से 9 फरवरी तक पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। एक भव्य उत्सव जैसे यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वासुधैव कुटुंबकम की विरासत और कच्छ के रण की शानदार सुंदरता को सामने लाया। Well, it's the first time I've been to India, and so far it's been an amazing experience. It's very different from other parts of the world I've been in, and yeah, Rann of Kutch is something that you wouldn't expect, you know. We've been with through the ride on the sunset with the camels, and it's something I wouldn't expect. And also something very special that I really like from India is the color everywhere. And here it was really astonishing because it was the contrast on the white ground and then the color of the people dancing, the clothes and everything. So yeah, so far the experience has been amazing. We are so excited to be at this meeting, very exquisite venue. And yeah, looking forward to the discussions in the meeting. The priorities set by the country is very much aligned to the priorities in South Africa, so very excited. बैठक ग्रामीण पर्यटन पर चर्चा के साथ शुरू हुई, जिसमें भारत के स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय आर्थिक विकास और समावेशी सामुदायिक विकास के प्रेरक के रूप में देखता है। ग्रामीण पर्यटन मूल्यों और गांव, उनके संबंध परिदृश्यों, ज्ञान प्रणालियों, जैविक और सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और कृषि जैसी गतिविधियों की रक्षा करता है। इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र में 5 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। हरित पर्यटन, एक स्थायी जिम्मेदार पर्यटन क्षेत्र। डिजिटलीकरण, पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना। कौशल, पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना। एमएसएमई, पर्यटन एमएसएमई, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की मजबूती। गंतव्य प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने वाले समग्र दृष्टिकोण की दिशा में गंतव्यों के रणनीतिक प्रबंधन पर पुनर्विचार। इस 3 दिवसीय बैठक के लिए गुजरात के कच्छ में 100 से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। गुजराती लोक नृत्य और संगीत के पारंपरिक स्वागत से उनका स्वागत किया गया।
of the first tourism working group meeting under India's G20 presidency at the Run of Kutch held extensive deliberations on the 5 key focus areas of this meeting: greening of tourism sector, digitalization, skill development in youth, empowering MSMEs, and the strategic management of tourist destinations. The delegates talked about how climate change can be dealt with in the tourism sector and how the tourism sector can boost the economies of the world in the post-pandemic era that we all are living in. So we've got Miss Lauren with us from Australia, and she is here to attend the first working group meeting of tourism under India's G20 presidency. Let's talk to her about how she feels coming to India. Welcome to India, Lauren. Hi, thank you very much. I feel very welcome here. It's incredible to be in Gujarat. You've been seeing the vibrant colors of India since yesterday, since you've landed. You've experienced the hospitality of India. How do you feel about it? Yeah, the hospitality here is absolutely incredible. I mean, we were able to go to the White Run yesterday, and the colors, the dancing, the performances, against that incredible white of the run, of the desert. Yeah, I can't put it into words. We're talking tourism here, Lauren, and we know that post-pandemic, tourism is a sector which has suffered a lot. How do you think we all can revive this sector? Yeah, it's incredibly important that we're here to work together to talk about how tourism can drive economic recovery and make sure that the benefits of tourism are also reaching local communities. So I've got with me 2 delegates from Egypt. Let's talk to them about how they feel coming to India and what they think about sustainable tourism. First of all, tell me, how are you guys feeling visiting here in the Run of Kutch? You've been given a very warm reception. How do you feel about visiting India? Oh, thank you very much. So it's our first time to visit India, and we are very impressed. Really, it's a very good experience, and we enjoyed the travel. We enjoyed everything: the hospitality, the warm welcome from the beginning, and the food. Everything was very good and very well prepared. For the event, it's very important. Seems very important because sustainability is now on the ground, and it is a very important topic. Egypt also has a milestone in sustainability, and we are planning to implement our strategy for sustainability. It's for a 5-year strategy, and we are working on developing it and implementing it closely with the international guidelines. Mr. Ahmed, she talked about sustainable tourism. How do you think in a post-pandemic world we can really achieve that? We have been shown today in the morning from the UNWTO presentation that tourism is recovering, and we are expecting 95% of operations of 2019 in the next year, in 2023. India is on the track. We are very happy for the hospitality. We are very happy with the organization, with the whole people here, how the people are dealing. We feel India is very authentic, very close to our, let's say, environment and our country, Egypt. It's actually incredible, India. So very beautiful. Thank you for this hospitality, and thank you very much. Did you guys have some traditional food, some local food here? Yeah. You guys remember the names of it? Maybe not the names, but we experienced vegetarian experience. It's very, very impressive, really. And we didn't think that vegetarian can make such such food and such variety. It's very, very tasty. Yes, it's very tasty. Yeah. And as Ahmed said, we have the same tradition in Egypt, history. We have some culture, common culture, but we are enjoying really, and the people are amazing, really. Yeah, you talked about the traditions, similarity between Egypt and India. How do you see that really connecting the two nations? Traditions between the two nations are very similar.
we are regarding the, let's say, the society. People are tying to families. This tends to be the same in Egypt. We are very similar regarding the weather circumstance. The weather is very nice also during these days. These things made, let's say, it makes both nations very close together. And we actually have a good flow of Indian friends coming to Egypt to visit Egypt in different resorts for the sun and sea and different products. So this is actually one of the, let's say, main relationships between the two nations. Well, I've got with me Miss Sandra Carvao from the UN World Tourism Organization. Let's talk to her about sustainable tourism and really the working group meeting that is underway under India's G20 presidency. Ma'am, first of all, welcome to India. You are from the World Tourism Organization, and we know that tourism sector is one of the sectors which has been largely hit by the pandemic. Do you see that now getting revived? Yes, well, I think 2022 was really a much better year than we expected. We've lost, during the pandemic years, more than 70% of international tourism arrivals, so you can imagine how it has been devastating for the sector. But we have seen a very strong recovery. Different regions have different levels of recovery, obviously. Asia is still lagging behind, but we now see that with the open up of many source markets such as China, Japan and Korea, we will see the movement again. India has been having a very good performance, so we are confident that the recovery will continue to be consolidated and that in next year we will probably be very, very close to the levels of pre-pandemic. Ma'am, what do we need to do more now to reach that pre-pandemic level? Well, I think there is two things. One, obviously, we need to consolidate recovery in the destinations which are now opening. They need to open in a safe way. But also, it's not only about going back to previous numbers, it's also to increase the benefits of the tourism sector in local communities, to ensure that we minimize our impact in the environment and to actually invest in people. We've been discussing this now in the G20 Tourism Working Group. How can actually tourism be that force to achieve the Sustainable Development Goals and make sure that we have a human-centered development, while at the same time, as the team of the president says, we're one family, one planet, and we really need to work together. Ma'am, one of the other major challenges that we're seeing across the world is that of climate change. The impact can be felt everywhere across the world. How can we really come together as one family, like you mentioned, and find a common solution towards sustainable tourism, and how tourism sector can really battle climate change? Well, this is one of the priorities actually of the presidency in tourism, green tourism, and we have discussed that during the meetings as well. UNWTO has been working alongside countries, but also the UN Environment Programme. We've launched the Glasgow Declaration on Climate Change, which actually asks commitments from the private sector, but also from governments and destinations themselves to measure better and to invest in the decarbonization of their operations. We know it's a process that takes time, but we need the right policies in place. We also need to invest in technology because there's a huge opportunity, and together I'm sure that we can advance step by step with that objective in mind. From the white sands of Run of Kutch to the vibrancy of the state of Gujarat, and right now they are at the Run of Kutch. They've been given a warm welcome, and 5 key areas have been highlighted in this tourism meeting on greening of tourism, empowering MSMEs, skill development for entrepreneurship, and several other areas which will be touched upon during this 3-day meeting, which is being held from the 7th till the 9th of February in the magnificent Run of Kutch. Well, the first G20 Tourism Working Group meeting has kick-started in Gujarat's Run of Kutch, and I'm joined by Union Tourism Minister Shri G. Kishan Reddy with me. Sir, first of all, many congratulations on hosting this absolutely magnificent, I would say, festival that we are organizing here. First of all, tell us, why was it thought that tourism is one of the key important sectors that should be discussed under India's G20 presidency? Not only in India, the entire world,
tourism is one of the important subject. Tourism give lot of employment, sustainability, GDP and culture also. इसीलिए हम टूरिज्म का जो G20 में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिया है. आज पहली बैठक आज शुरू हो गए. 3 दिन का बैठक कच्छ में होगा और उसके बाद दूसरा मीटिंग श्रीनगर, गोवा में लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग, G20 कंट्रीज के टूरिज्म मिनिस्टर्स का मीटिंग गोवा में होगा. क्योंकि भारत आज जितने भी टूरिज्म का प्रमोशन करना है, आप गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, एनी स्टेट, आपको इतना अच्छे एनवायरनमेंट ऐसे का एनवायरनमेंट मिलेगा दुनिया में किधर भी नहीं. और इतना ब्रांडिंग अपन करो नहीं पाए. अभी ब्रांडिंग करने का प्लान किया है और डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं. टूरिज्म के बहुत कुछ काम हो रहे हैं. अभी आप कोरोना पहले से जितने डोमेस्टिक टूरिज्म थे उससे बढ़ गए. अभी श्रीनगर कंपेयर किए तो आज़ाद के बाद पहली बार इतने टूरिस्ट श्रीनगर में आए और जो फॉरेन से टूरिस्ट आने का है. अमेरिका लगभग जो कोरोना से पहले लगभग 90% जो फॉरेन अमेरिका से आने वाले थे फॉरेन टूरिस्ट अभी 90% पहुंच गए. ऑस्ट्रेलिया कोरोना से पहले से जितना ज़्यादा अभी पहुंच गए. अभी मेरे ख्याल से कमिंग 2-3 मंथ्स अगर दुनिया का वातावरण अगर ठीक रहे, कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो दुनिया में, कमिंग 2-3 मंथ्स भारत में बहुत बढ़िया फॉरेन टूरिस्ट आएंगे. डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना अट्रैक्शन है. सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म अभी बता नहीं सकते. किधर भी आप यू गो टू अयोध्या, यू गो टू वाराणसी, यू गो टू वृंदावन, यू गो टू ताजमहल, यू गो टू हम्पी, एनीवेयर इन इंडिया आप जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में बहुत पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म बोलो तो रिटायर्ड ऑफिसर्स, सीनियर सिटीजन्स आते थे. अभी ऐसे नहीं, नौजवान लड़के लड़कियां भी आज स्पिरिचुअल मंदिर देखने के लिए, हम्पी देखने के लिए सभी जगह आ रहे हैं. ये बहुत गुड साइन है. टूरिज्म आने वाले दिन में भारत में एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होगा. टूरिज्म दुनिया में एक बड़ा अट्रैक्टिव सेंटर, क्योंकि आप अलग अलग जैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया है, टूरिज्म के बारे में भी डेस्टिनेशन इंडिया होगा. जैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज दुनिया में भारत बड़ा डेस्टिनेशन है, वैसा ही टूरिज्म के बारे में भी आने वाले दिन में भारत बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया होगा. अब इतना सुंदर दुनिया में किधर भी नहीं है. ये कच्छ का जो डिजर्ट, जो वाइट डिजर्ट दिख रहे हैं, अब दुनिया में किधर ऐसा अलग अलग जियो स्टेट में जाओ, अपना एक स्पेशलिटी भारत के लिए है. सर, आपने मेंशन किया पैंडेमिक, उसके बाद टूरिज्म बढ़ा है, बट ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया इज लीडिंग इन क्लाइमेट एक्शन, वेदर इट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर हमारे नेट जीरो एमिशंस बाय 2030 अचीव करना, वो हमारे टारगेट्स रहे हैं. हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू टैकल दिस व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म, क्लाइमेट एक्शन इन द टूरिज्म सेक्टर? हम ग्रीन टूरिज्म के दृष्टिकोण से आज फर्स्ट मीटिंग में एजेंडा ग्रीन टूरिज्म के ऊपर हुआ है. रूरल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म. रूरल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म के आधार पर ये सस्टेनेबिलिटी, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का दृष्टिकोण से जो क्लाइमेट चेंज का समस्या है उसको अपन एक भारत सबसे पहले सब दुनिया के अदर कंट्रीज पहले बोलते थे भारत में कोई देखने वाले नहीं है, ऐसे क्लाइमेट चेंज के विषय पर कोई ध्यान नहीं देते. आज दुनिया में भारत को लीड करने वाला है. ग्रीन टूरिज्म हो, अलग अलग दृष्टिकोण से आज ठीक का काम चल रहे हैं. Sir, also one of the key highlights, key focus areas of this meeting is empowering youth, skill development of youth and entrepreneurship. And we know that Prime Minister Modi has been, encouraging and nurturing this startup ecosystem in the country. How is India really planning to do this along with G20 member countries? अभी G20 कंट्रीज के संबंधित हो अलग अलग विषय पर भी अभी हम जितने भी टूरिस्ट गाइड्स है अलग अलग उनका वर्चुअल ट्रेनिंग दिया. कोरोना में समय पे अब लगभग 30,000 लोगों को हम वर्चुअल ट्रेनिंग दिया है. ग्वालियर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसका ब्रांचेस अलग अलग स्टेट वाइज भी खोल रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स भी है और जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लोगों को टूरिज्म का इम्पोर्टेंस और टूरिज्म का द्वारा रोजगार, पहले इसका रोजगार के दृष्टिकोण से टूरिज्म देखते नहीं थे. आज अभी आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट से
अब 80 लोगों का रोजगार मिलता है भारत में, 10 लाख, सिर्फ 10 लाख को इन्वेस्टमेंट से। ऐसा ही आने वाले दिन में जो एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भारत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। इसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो, गाइड्स का भी हो, होम टूरिज्म का भी। होम टूरिज्म में एक घर में विदेश का हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट आए तो घर में कैसा रखना, भोजन कैसा लगाना, उनसे कैसा बात करना, रूम कैसा डेकोरेट करना, बैंक लोन्स दिलाना उनको, रूम्स को कम इंटरेस्ट है बैंक लोन्स दिलाना, कुछ जगह तो फ्री इंटरेस्ट बैंक लोन्स दे रहे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे। ऐसा होम लोन्स, होम टूरिज्म का दृष्टिकोण से हर घर एक टूरिस्ट का होम बनना चाहिए, ऐसा भी काम चल रहा है। Day 3 at the first G20 Tourism Working Group meeting at Gujarat kick-started with a rejuvenating yoga session for the delegates who have come here. Apart from this, they also later went to UNESCO World Heritage Site Dholavira, which has the remains of one of the most ancient and earliest civilizations, the Harappan civilizations. On the sidelines of the meeting, there was also a panel discussion on archaeological tourism and how it can impact the economy and preserve every country's heritage. योग सत्र, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कच्छ में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समापन बैठक का हिस्सा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में समापन दिवस की शुरुआत सुबह सुबह योग सत्र से हुई। आसमान में सूरज की पहली किरण के रूप से ही प्रतिनिधियों ने योग आसन शुरू किए। उन्हें योग के लाभ और यह कैसे शरीर और मन को मजबूत बनाता है बताया गया। उसी दिन पुरातत्व पर्यटन पर एक पैनल चर्चा से पहले मेहमानों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा किया, जहां उन्होंने सबसे पुरानी मानव सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में सीखा। धोलावीरा एक 5000 साल पहले की सभ्यता है। उसको 1967 में उजागर किया गया। उसके बाद 91 के आसपास एग्जीबिशन का काम शुरू हुआ। 12-13 साल कुछ काम एग्जीबिशन हुआ, 30-35% एग्जीबिशन हुआ। बाकी का काम क्या है कि ये भूकंप है, बारिश है, उसके ख़राब होने की वजह से, खुला रहने की वजह से आगे का काम नहीं हो पाया है। उसके बाद धोलावीरा का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। आज G20 की वजह से हमारे पास जो भुज के जाने के लिए जो शॉर्ट रास्ता था, जहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे है, वो रास्ता बन गया। यहाँ से फॉसिल पार्क 8 किलोमीटर, सनसेट पॉइंट रन में जाने के लिए जो रास्ता नहीं था वो रास्ता बन गया। कनेक्टिविटी ठीक हो रही है, पानी का भी प्रयास चालू है। और धोलावीरा को लास्ट अगले साल जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, उसके बाद ये पूरी प्रोसीजर शुरू हो गई है। और आगे के टाइम में धोलावीरा एक भारत में एक नंबर 1 उभर कर बाहर आएगा। धोलावीरा 3000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ करता था और इसकी जल प्रबंधन प्रणाली और सामाजिक शासन के माध्यम से उस समय के वैज्ञानिक स्वभाव का पता चलता है। This site is unique in the sense that it is the biggest location of Indus Valley civilization, also very famous for the water conservation and harvesting, which we had around 5000 years back in ancient India. पुरातत्व पर्यटन और दुनिया भर में पुरातत्व विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर एक साइड इवेंट भी आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए कि कैसे पुरातत्व संरक्षण पर्यटकों को आकर्षित करता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। Spanning between the periods of 3000 and 1500 BC, the Harappan civilization is evidence of the entire trajectory of the rise and fall of the early civilization of humankind. But it is also a great example of the multiple achievements of our ancestors, whether it is in water management, social governance, or other management and scientific techniques that they used during their civilization. This is
the great Dholavira, the remains of the great Harappan civilization. गुजरात की अपनी यात्रा के अंतिम दिन G20 प्रतिनिधियों ने भुज में स्मृति वन स्मारक का दौरा किया, जो आधुनिक भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है। Apart from our declarations at the international conventions, Prime Minister Modi and the UN Secretary General launched Mission Life recently in India, and we are working in close coordination with the Environment Ministry to have aspects of the Mission Life incorporated in the travel and tourism industry also. So in fact, we have come out with a Travel for Life pledge. So, we will be implementing such actions which will take care of the priorities of Mission Life. Moreover, whenever we are undertaking new projects in tourism, we are putting sustainability and responsible behavior at the core of all these issues. New projects will have sustainable tourism as the core theme, and also we recently did a important meeting with the industry leaders, where I find that there also the industry itself is keen on practicing sustainable tourism practices within the sector itself. So all told, I think we'll see greater coalition of public and private sector to implement this going ahead in India. Well, that's all we have in Y Factor this time. Next time we will get another interesting episode. Till then, bye-bye.